India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच। आज हमारे साथ है राजा मुनीब साहब, जिनको मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि भाई अगर बलोचिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है तो हम आपके पास दोबारा राजा साहब को लाएंगे एंड वी विल ट्राई एंड एनालाइज हो क्या रहा है। एंड एज एनालाइज्ड, ठीक है, हमने जिस तरह से एनालिसिस करी थी, पिछले 2 हफ्ते से हम ये चीज बोल रहे हैं कि भाई बलोचिस्तान का बैंड बज चुका है, द गेम इज नाउ स्टार्टेड अप देयर। ये चीज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कल बोली गई। So राजा साहब, पहले आपको नमस्कार करते हैं, then let's make people hear that video. नमस्कार सर, प्लीज टॉक अबाउट इट। मौलाना फजलुर रहमान साहब का वीडियो हम दिखा देते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला क्या, so then we shall kind of take the discussion forward. ये आ गए जी। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट? ठीक है, दिस इज वन। एंड एज वी टेक राजा साहब इनटू द गेम, एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगा वेयर ही स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट बलूचिस्तान। तो राजा साहब, पहले ये बताओ यार, ये सडनली क्या है भाई, क्या हो गया? कुछ हैप्पी रियलाइजेशन हो गई है कि क्या हुआ है कि मौलाना हैड टू कम आउट एंड से कि भाई बलूचिस्तान खत्म हो गया? KPK, he is referring to KPK here. हाँ, What I told you, we had discussed long time. He is referring to KPK here. But his latest storm is the Balochistan storm. वो भी बोला है इसने वीडियो में, आगे ही बोला है, आगे ही बोला है इसने। So I will tell you what has happened there. Continue, bro. Acha, you want me to continue? So he is talking. There's a little bit of a glitch in that video. I'll find the new one and play it right now. तो आप शुरू करो। अच्छा, okay. So basically he's talking about KPK here. ये इसने KPK के बारे में बोला है। See, what is the notion in Pakistan is that once these passes open, there is no way Pakistani military can even step there, put a foot in some areas in KPK. They have lost their written KPK. ठीक है, जो और वज़ारिस्तान है उसके ऊपर जितने भी एरियाज हैं, मर्दान वगैरह के हैं, वो इनके हाथ से गए हुए हैं। वहां पर TTP has almost taken over, and now the thing is कि जो बचा कुचा ये कोशिश कर रहे थे तो वो भी इनके हाथ से चला गया। पुलिस ने तो पहले ही वहां बैकआउट कर लिया था, वो तो पहले ही वो भाग गए थे वहां से पुलिस वाले, फिर आर्मी वालों ने उसको विकेट किया। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हकायक तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। इस वक्त जब हमारा ऐवान यहां बैठा है,
सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है, और सड़कें और इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वत। आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन चाहिए? बेस्ट इज गवर्नमेंट ने कोई रिबटल भी नहीं किया कि नहीं ये गलत बोल रहा है। गवर्नमेंट रिबटल करेगी क्या? आपको याद है मैं 1 महीना पहले ये बात बोली थी, हमने इस पे पॉडकास्ट किया था कि वेयर दे हैव लॉस्ट देयर रेट एंड वेयर दे आर अबाउट टू लूज देयर रेट। ठीक है, केपीके दे हैव लॉस्ट देयर रेट, कंफर्म्ड है, वो तो पता ही है कि केपीके के कितने एरियाज है, और जो पारा चनार में चल रहा है एंड दे आर नॉट इवन एबल टू रीच दैट। यार इट्स अ 150 चिल्ड्रन हैव डाइड देयर बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, खाना तक नहीं पहुंच रहा, बहुत बुरा हाल है वहां पे। पाकिस्तान बात नहीं कर रहा है इस बारे में, neither anybody else is talking about. So केपीके तो इनके हाथ से वैसे ही गया है। बलोचिस्तान के देखो, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात इसमें, you know, he said something कि अगर ये 5-7 डिस्ट्रिक्ट कल को आजादी डिक्लेयर कर दें तो अवाम मुत्तहिदा जो है वो इसको कबूल कर ले। अवाम मुत्तहिदा इज यूनाइटेड नेशंस, UN, United Nations. So he is signaling there something. He's signaling very, very carefully something, saying that UN will accept. What does that tell you? That tells you, one, this is beyond Pakistan's control. This speech is not his speech entirely. And it is a reality what we have been talking about. अब ये कौन से 5-7 डिस्ट्रिक्ट हैं? ये 5-7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हैं केच के, इसमें आपका आता है डेरा बुख्ती खान। चलो मैं मैप लगा दूं, मैप खोलते हैं। हाँ मैप खोल दो, ठीक है। बाय द टाइम गाइस जरा मिशन 400K को याद जरूर करिएगा, डोंट फॉरगेट दैट। इसमें आपका आता है जोब। एक सेकंड इसमें आपका आता है, आप खोलो वो आ जाएंगे। Yeah, and guys, we are at 397, just a live score count 397,747. ठीक है, map is just loading up and here we go. Oh, sorry, my apologies, I opened the wrong screen. Here we go. Map here. Yeah, there you go. Tell us, sir. मैं तो ऐसे बता दूंगा, मुझे बहुत छोटा है मेरे स्क्रीन के लिए, बट इसमें आप देख लो डेरा बुख्ती खान है, सबसे पहले डेरा बुख्ती खान। क्वेटा से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेटा को आप निकालो। क्वेटा, हाफ ऑफ क्वेटा, नॉट फुल क्वेटा। क्वेटा स्टिल पाकिस्तानी मिलिट्री हैज कंट्रोल। दिस इज डेरा बुख्ती खान, दिस इज केच, दिस इज जोब, दिस अब्दुल्ला। ठीक है, इसके नीचे आप आओ, हाफ ऑफ मस्तंग भी, which is adjacent to Mustang, half of Mustang, half of this. Then you have, just a moment, give me, इधर गया, you have कलात तो साउथ में पड़ गया ना यार, ये रहा। हाँ, तो यहां से लेकर आप ये पूरा एरिया कार्व आउट करो, पूरा ये डेरा बुख्ती खान वाला, कलात से लाइन ड्रॉ करो टुवर्ड्स जलाल खान, डेरा बुख्ती मैप, ये बागा नगी, ऊपर की तरफ केच के साथ है अब्दुल्ला, सैफ अब्दुल्ला शायद उसको बोलते हैं ये, हाँ मुझे नाम भूल गया, और ये पंचपाल एरिया। ये जो एरिया है, दिस एरिया। नाउ इफ यू चेक दिस एरिया, in a sense he is saying basically this area, you know. So but what is interesting about this area? What is interesting about this area? This area, if you open, one, the CPC goes through them. Second, you just open the Pakistan's map and see which this area touches down to. Where does it go? Neighboring country becomes. ग्वादर तो नीचे आ गया ना, ऊपर। ये चमन बॉर्डर की तरफ आप, exactly. चमन कांधार का रोड है यहाँ पर, पता है तो। हाँ, exactly. So who is this? What is he signaling? This has also fallen to the Afghans. Excellent. चमन, ये तो स्पिन बल्डक गया तो गया, ये तो यार स्पिन बल्डक is the main one. Yes, exactly. So what he's saying is that this is going to the Afghans. This is also
there are two messages in this. One is to the Chinese saying that, you know, तुम्हारा ग्वादर तो नीचे है, but उसके ऊपर जो है वो सारा जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है, and you are in danger. So it is kind of telling Chinese that you make your decision what you want to do in Balochistan. ठीक है? Message number one is that. Message number two is, and which has not gone well in the Pakistani army. That is why I said कि आयशा सिद्दीका ने भी उस दिन वो लिखा है. उसके बाद अब मौलाना ने openly आके ये बात बोलनी शुरू की है. Is Asim Munir. This is a warning to Asim Munir. I think this is the final warning to Asim Munir. Because the day that attack happened, जिसमें इनके लेफ्टिनेंट मरे और बाकी वो 10 जवान मरे, they lost about 35 people in two. It has not gone well in Pakistan that Asim Munir was inaugurating that Green Punjab initiative while his men were fighting and dying. He was riding a tractor. He was riding a tractor. वो ट्रैक्टर की फोटो भी तो है, वो ट्रैक्टर के साथ ही तो खड़ा है. उसके बाद वो कैबिन में भी बैठा था, उसके एसी ट्रैक्टर में बैठा था. It has not gone well in Pakistan. It has not gone well with this. तभी इन्होंने रात को वो ड्रामा किया, वो उसी दिन रात को इन्होंने वो ड्रामा किया, हमने एयर स्ट्राइक की, ये किया, वो किया, राइट? वो एयर स्ट्राइक भी कुछ नहीं थे, वो डट निकले एट द एंड ऑफ द डे. तो आप बेसिकली बोल रहे हो दिस इज अ फाइनल वार्निंग टू आसिम मुनीर कि बेटा सुधर जा, नहीं तो हम तेरे को सुधारेंगे भी. This is a final warning to Asim Munir saying that get it things in order, and otherwise, and the game he's playing, he will have to rejig his game. ये जो कश्मीर की वो गेम स्टार्ट करने वाला है ना, he's starting it on multiple fronts, and I think this is a warning to him saying that this is not going to work. It will fail spectacularly. So Asim क्योंकि Munir पाकिस्तान में as I am Munir, is that what you're saying? या उसका ला 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 गा 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 कर देंगे ये. मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है कि अगर वो कहीं नहीं करता इस चीज को, and he goes on down the path he has taken, उसका ला 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 बाबा बाबा हो जाएगा. This is a very, very strong warning to him. Fazlul, देखो, out of all the politicians in Pakistan, Fazlul Rahman is somebody who, one, is a very, very deep asset of the deep state. Apart from that, yeah, he is known by everyone. He doesn't make any, he never makes any irresponsible statements. He is never into jingoism. He's a very calculative, very shrewd, and an asset of Pakistan establishment. Very calculative, very shrewd. So what if he's saying what he's saying, in all earnesty, please take it very seriously. He would not say these things. He's not Akhtar Mengal. Wow. Right? If Maulana is saying these things, the Pakistani establishment had a stamp कि मौलाना साहब आप जाके पार्लियामेंट में बात करो. मौलाना विदाउट अप्रूवल ये बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं बोलेगा. और उसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने उसको अप्रूवल दिया होगा, दैट इज वेरी क्लियर. सो दिस इज प्योर सिग्नलिंग, वन टू द चाइनीज सेइंग दैट you know your investments are going sour, and we know Maulana is favored by whom. We don't need to say that. A particular international lobby favors Maulana, have always favored them. So one, at their behest, the signaling is very clear to the Chinese. On internal front, the signaling is very clear to Asim Munir saying that, boss, you are on a notice period and this is an official notice period. So Asim Munir की घंटी का आप अलार्म का टिका दबा दो. He is not going to be there for long. वो 5-7 साल के ख्वाब देख रहा होगा. जनरल जिया भी पूरे उम्र के ख्वाब देख रहा था. You know, I told from the beginning, I've been saying he's trying to be a mix of Ayub Khan, Musharraf, and Zia. And he's ending up like a Zia too. One thing that we need to see in this entire game is हमने एक चीज नोट करी है कि अभी आसिम मुनीर गया था कहां पर, इंग्लैंड. He is in England. He was in London. अभी भी वहीं है. तो ये अटैक जान के कराए इन लोगों ने पीछे से. हाँ, इट्स अ क्लियर सिग्नलिंग कि ये जो इंग्लैंड करने भी गया है ना, ये एक मतलब ठीक है, वो इसका एक तो वो ये अफगानियों के उस पे गया है कि यू नो पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम अफगान तालिबान, इज गॉन टू गार्नर सम इंटरनेशनल सपोर्ट इन दैट सेंस, क्योंकि इसको पता है यूएस से तो उतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला. ही इज ट्राइंग टू यूज यूके नाउ. एक तो यूके के साथ
कोशिश कर रहा है करने के लिए. UK plays a very dirty game. UK का role is very muddy. So sorry, it's UK is all mud, so they would welcome an equal swine there in this mud pool to play. So एक तो ये वो करने गया हुआ है, and this is a very clear signaling telling him कि boss, what you are thinking and what you are doing is not going to work. They will seriously have to do something about Pakistan. They seriously have to do something about their own country. They have no idea what all they have. You can't run a country like this. Pakistan is on an edge of civil war, boss. It needs one spark, right spark. It will blow up. क्योंकि KPK का रिट चला गया इनके हाथ से, कुछ नहीं कर सकते वहां पर. They cannot do anything there. इनके बस की, they will have to use an enormous amount of resources, and they will have to risk a war with Afghanistan to get back into KPK the way they have lost KPK. Right now, will they risk a war with Afghan, and they are preparing on this side? ये तो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जो है, हम इंडिया के साथ पंगे लेंगे दोबारा से तो हम relevant हो जाएंगे. This guy is, down a spiral which is going to break Pakistan, literally. इंडिया से पंगे के बारे में एक बहुत पुराना वीडियो है, but I like to see this because it does give you some sense as to what India's policy is. ठीक है, Ajit Doval had said this. Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me, and I can never win because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time. You throw a stone when you want. You have a peace when you want. You have the talks when you want. If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Yes. Try it. Can't get clearer than Try that. it. It can't get clearer than that, and they know exactly. I think Maulana Fazl Rahman has more head here. He knows what the game is going on to be and what Pakistan is going to lose than this journal who's on who's stupid. Jackass. So this is a very, very interesting, very serious thing. But look, it doesn't take me by surprise. We know what is happening there first. We have been saying this for long says कि अपना घर तो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम कहाँ निकल रहे हो. तुमको इस्लामिक उम्मा ने भी लात मारती है, तुमको वो भी नहीं पूछते. तुम अब बहरीन से उठा के लाते हो बहरीन के बादशाह को, बोलता है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा. शर्म करो यार. While the Saudis and the Qataris are visiting India, you are getting the Bahrain Sheikh and trying to tell people investment आएगी. You are getting Erdogan is gifting you an electric car and you are telling कि यार यहाँ से भी हमको पैसे आएंगे. So you have been kicked out. Americans doesn't care about you. They don't speak about you as if you don't exist on the world map. The Chinese are giving you a cold shoulder. You send Asif Zardari for a rollover of $3 billion. The Chinese give you a little middle finger saying that, hello, this is what I can give you back. That is what they gave them. They gave them a middle finger. Yeah. So sorry to say that. Sorry to show you this finger, but that is true. That is exactly what he got. So Chinese have given you a middle finger. Okay, your own jihadis have are giving you troubles and giving you knots in your stomach like nobody else. You are in dire states in Parachinab. Your internal security is in shambles. You are getting hit by TTP sitting in Islamabad, in Punjab. And today also one policeman has been shot dead in Punjab. By the way, वो तो खैर रोज का ही बन गया, वो तो कोई गिनता भी नहीं है उसको count. They are going effectively nowhere. And then now the international media has doubled down. Kal Arif Alvi ka ex-president ka dekho. He has clearly blamed Biden regime for a regime change and a rigged election in Pakistan. He was very vocal about it that, they sent money for elections and this is the most rigged election we have seen in history of Pakistan. Yeah. वो भी double down कर रहे हैं तुम. तो boss,
अरे किसको आज बेवकूफ तो बनाया? आज तो ट्रम्प ने ओपनली बोल दिया यार, आज तो ट्रम्प ने ओपनली बोल दिया, मैंने ओपनली ट्रम्प का ट्रम्प के स्टेटमेंट आज का नहीं पढ़ा। अरे साहब, ट्रम्प has openly come out and said they are sending $21 million पाकिस्तान पे, to इंडिया इंडिया का, का। हाँ, तो या we'll give the list, किसको गया है पैसा, हाँ, they wanted a regime बड़ा change। क्लियरली बोला है ट्रम्प हाँ, ने कि भाई ये तो इंडिया को भेज रहे थे, ऑब्वियसली दे वांटेड समबडी एल्स इलेक्टेड देयर। somebody else elected, वो तो उसने साफ बोला आज, क्लियरली बोल दिया। यार इट So कांट boss, get they are, clearer than that, they are, as clear as day यार। हाँ, so this is a very clear signal to Asim Munir and to the Chinese. The Chinese are now in a doldrum because एक तरफ से तो रशिया के साथ the peace is going to happen, ठीक है, which is not going to be because US and Russia relations are not good for China. The Chinese are going to be very skeptical with this kind of mending of relations between US and Russia. So the Chinese will be, do we need Pakistan or do we not need Pakistan? Do we go on a very offensive in Pakistan or do we use Pakistan more? I think now they will come and they would be very happy because ye jo Pakistani plan hai na Kashmir mein, I think this is, the Chinese would have funded some money for this as well. I have no doubts about it. Americans to nahi karne wale, but they have approval from China. जिस हिसाब से इन्होंने ये स्टार्ट किया ना मीडिया में, और द वे दे आर अगेन स्टार्टिंग देयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आई बीन ट्रैकिंग देयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फॉर सम टाइम, देयर इंस्टाग्राम रील्स, देयर रेडिट एंड देयर ऑल दैट नॉनसेंस जो उनका नया से स्टार्ट हुआ है, एंड बिलीव मी दे हैव पुट मनी इनटू इट दिस टाइम। वो फ्री के काम नहीं है, सो पैसा कहाँ से आ रहा है वी डोंट नो येट, बट विल फाइंड आउट हु इज फंडिंग इट, ठीक है, क्योंकि यूएस में तो अब मुश्किल है इनको पैसा मिलना, बट आई एम प्रीटी श्योर कि देयर वुड बी सम चाइनीज एंगल टू। नाउ हाउ द चाइनीज, एंड दिस इज अ वेरी क्लियर सिग्नल टू द चाइनीज सेइंग दैट बॉस आइदर यू कम एंड टेक अफेयर कंट्रोल ऑफ योर ओन अफेयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट और बाय बाय टाटा सी। So how the Chinese will see this, let's see, it will play out in a couple of months, we'll come to. Fair enough. But then again for China, as I said, it makes a lot more sense. If I am India, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है? Yeah, my response will be very brutal. मैं तुम्हारा बलूचिस्तान में आग लगा दूंगा, सिंपल एज दैट। वो तो आग लगी हुई है, मैं और जलाऊंगा। नहीं, हमको बलूचिस्तान भी क्यों जलाना? We will blow them on this side of the LOC यार। We'll squeeze the hell out of them। वहां से अफगान स्क्वीज करेंगे, वहां से अफगान स्क्वीज करेंगे, यहाँ से हम स्क्वीज करेंगे। वो तो देख ही रहे हो, बलूचिस्तान में तुम्हारे को मिंसमेट बनाएंगे। वो तो देख ही रहे हो, एक गोली का जवाब जो यहाँ से गया था। I mean, we've killed 15-17 of their chaps already, हमने already वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तुम्हारे रोज ठोकते हैं, हम भी ठोकेंगे, हम यहाँ भी ठोकेंगे, बलूचिस्तान में भी तुमको ठोकेंगे। फिर तुम जाना चाइना के पास बोलने चाइना से करवाना, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, बट इफ रशिया, अमेरिका, इंडिया, एज एन आंसर टू चाइना, बट आई डोंट थिंक ये सब काम करोगे तो बलूचिस्तान में हम आपकी चीजें को देखते हैं, फिर कितना जाओगे तुम लोग, कितना करोगे? नहीं, और ये भी देखना है ना कि जी और ट्रम्प की मीटिंग कैसी रहती है। I don't think Chinese are going to be stupid and going to take all that crap which the lefties were running in US and at December will on their own head and say, okay, this is not going to happen. The biggest clue came out of the tech guys. You know what the tech guys have said? Anything but China. A, B, C. Simple formula. I know that. Anything but China. Yeah. Anything but China, but at the same time, China will look to mend ways with you right now. They will be saying, okay, let's work closely with India right now. नहीं होगा ना. That is what is going. That will be a natural response. ठीक है. But ठीक है, वो ट्रस्ट बनाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। देखो, अगर ट्रस्ट बनाना है तो इससे बड़ा ऑप्शन, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास। हाँ, बढ़ाओ ना, फिर हटो तुम पाकिस्तान से, J10C वापस लेके जाओ अपने। वैसे वो थके हुए जहाज हैं यार। नहीं, तुम वापस लेके जाओ। वैसे ही थके हुए हैं यार, उड़ा लो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। J10C को उड़ा लो, एक इधर दे दो, हम उड़ा लेंगे। हाँ, मैं दे दो, हम उड़ा लेंगे एक आधा। Let's see, there is no trust with China, but at the same time, if they want to be hostile from Pakistan, look, boss, at the end of the day, the Chinese are going to do what the Americans did with Pakistan. ठीक है? Yeah. So if they want to back Pakistan to be hostile, then Pakistan will burn more.
At the end of the day, it is Pakistan which is going to burn. Neither India nor China nor America, nobody is going to burn, but Pakistan is going to burn. So Pakistanis can he can be a Nero and see his city being burnt. Very nice, no problem, very good for us. We are very happy. बढ़िया What है, is the problem? वो तो चलने दो, वो कोई टेंशन नहीं है. हाँ, तो चलने दो, doesn't matter. That ठीक we है. are very happy with. हाँ, तो we'll take care of it. But internal Guys, situation, Pakistan now needs a very micro view on focus. it. Guys, जरा Very like micro करना मत focus. भूलो यार. There are hardly any likes in the show. Before I ask my next question, देखिए साहब, इसके अंदर एक चीज आपको और मतलब we have to dig into is now the campaign season is also starting. ठीक है, hunting season जिसको बोलते हैं लोग, वो शुरू हो रहा है. वो हमारे यहाँ पर भी शुरू हो रहा है और वो उधर पे भी शुरू हो रहा है. और जिस तरह से पारा चिनार में चीजें चल रही हैं, जिस तरह से कोश पत्रिका में चीजें चल रही हैं, जिस तरह से बॉर्डर फायरिंग हो रही है वहां पर, हमारे तो यहाँ पर ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स आवर आर्म फोर्सेस, हमारे यहाँ पर मजाक कर रहे हैं. व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ऑन दैट साइड? Oh boy. You have no idea. Last 4 days, they have been continuously at each other's throat around that Nangarhar area. It's pretty bad. Yeah. Now, yesterday, Pakistanis lost 2 soldiers. Yeah. उसके अंदर एक बड़ी चीज निकली है. And please comment on that. Afghanistan has fired 80 GMs at Pakistani posts. ये काम हम करते थे एक टाइम पे. 80 GM anti-tank guided missile fire करी है. And उसका वीडियो देखो, जैसे हमारे पुराने वीडियो आते थे ना, ऐसे करके मिसाइल आती थी एंड पुट करके इन द पोस्ट एंड द पोस्ट गोज अप लाइक दैट, बंदे उड़ रहे हैं. आई हैव सीन एग्जैक्ट सेम वीडियोस कमिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान. That happened yesterday, no? That they fired an 80 GM on a Pakistani post, blowing up 2 of their men. साहब ये किसने दिए इनको? 80 GM तो उनके पास बड़े पड़े हुए हैं. वो अमेरिका के 80 GM इतने पड़े हुए हैं उनके पास. अभी तक तो यूज नहीं कर रहे थे. अब तो करेंगे. इन्होंने ड्रामे जो किए थे एयर स्ट्राइक, मैंने आपको बोला था ना, ये तो ये शोबाजी करेंगे पाकिस्तानी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो वहां से रिस्पॉन्ड, देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है. पाकिस्तान जानबूझ के ये चीजें कर रहा है. पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर रेलिवेंस बैडली इन इंटरनेशनल कम्युनिटी. वो अफगानियों से भी पंगे ले रहा है, वो हमसे भी पंगे लेने के मूड में आया हुआ है, मतलब रेडी कर रहा है कि मैं पंगे. उसको ये लग रहा है कि रिस्पांस जो आएगा अफगानिस्तान से आएगा, इंडिया से आएगा, एंड हम लोग रेलिवेंट बन जाएंगे. दुनिया बोलेगी नहीं पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत करो, bring them on a global stage. What Pakistan is not realizing, neither the Indians are the fools nor the Afghans are the fools. Just because you are creating all these blast through ISKP in Afghanistan, Afghans are not going to react to it very quickly. Yeah. Afghans will wait it out. Same, they are waiting it out on the border with you guys. So ठीक है, तुम क्रॉस LOC शेलिंग करोगे, यहाँ भी मरोगे, वहां भी मरोगे. वो 80 GM से उड़ाएंगे, हम तुमको आर्टिलरी से उड़ाएंगे. उड़ना तुम नहीं है. वही मैं कह रहा हूँ, at the end of the day it is them who are going to get blown up from this side or that side. So how does it matter to us? So they are seeking relevance. This is not going to come back because the problem is, boss, आप कितनी देर तक ये गेम खेलोगे कि ये भी हम पे अटैक कर रहा है, वो भी हम पे अटैक कर रहा है, ये इंडिया की साजिश है, तालिबान भी इंडिया है, अब क्या मौलाना फजल रहमान भी इंडिया है, इंडियन एजेंट बन जाएगा. I want to hear that, yaar. I dare them label him as an Indian agent. Dare them label him as an Indian agent, saying that ये इंडिया की साजिश पे इसने बोला है. जरा बोले, कोई मुंह खोले पाकिस्तान में, करके देखे. ये तो मतलब मतलब वो TLP वाले ऐसे आके प्रोटेस्ट करेंगे ना, उसके बाद ऐसा प्रोटेस्ट, हाय पाकिस्तान का पी मिट जाएगा. नहीं, कोई मुंह खोल के बोले ना कि ये फजल, क्योंकि इनका यही होता था ना, जो बलोचिस्तान की बात करता था उसको कहते हैं एजेंट है इंडिया का, अमेरिका का, इंडिया का. जरा बोले ना फजल रहमान को कि एजेंट है इंडिया का, बोल के तो दिखाओ. So this whole game is gone for a toss. The world has known that this is what Pakistanis will do to gain relevance. And they are not willing to give them relevance because they know that the problem created within Pakistan is Pakistan's own problem. It is not anybody's problem. Balochistan is Pakistan's own problem. KPK is Pakistan's own problem. Terrorism is Pakistan's own problem. Pakistan creates these problems within and tries to blame its neighbors. This game is not going to get played in international community. The messaging is very clear. The message has been delivered to us and Muneeb via Fazlur Rahman. And you look at the let's see. ये जो let's see. मैच हुआ ना,
हैं नहीं, वो तो हारे वाले जीते मुझे नहीं पता, बट वो मैंने कल अच्छा ट्वीट पढ़ा है, किसने लिखा था, उसने लिखा था यार स्टेडियम तो इन्होंने बना लिया, टीम बनानी भूल गए सारे, मैच हार गए। अरे साहब, मैंने एक देखा वो 3 कमेंटेटर बैठे, ऊपर से जेट्स निकले ऊपर से, उससे लेको अरे वो क्या, वो बेचारे प्लेयर भी, इवन द प्लेयर्स वेंट कि ये क्या हो गया, कहीं बॉम्ब तो नहीं। तो कोई भरोसा नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स आके बॉम्ब फेंक के चली गई। Sorry, you never know. No, you don't know Pakistan. You don't know. You remember the attack on Sri Lankan team. You never know in Pakistan what can happen, when it can happen. But I think एक दो सब्जियां उगाने के दिन खत्म हो गए। एक दो छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से वीडियो हैं, जब आपके साथ होते हैं तो हम मीम रिव्यू जरूर करते हैं। I've got some really special ones today, huh? So guys, let's get into some memes. These are some snacks in Pakistan. So let's have a look at them. Snacks in Pakistan. सबसे पहले आएगा आपके पास स्मैट बीट्स, मिल्की बॉल्स, फेरी रोज, ये तो फेरेरो रोशर का कॉपी लग रहा है। B&B, बंटी एंड बीन्स। This is oh my god, this is American thing. TikTok. Kit Kat. मार्स का मैस। Oh my god. ठीक है, उसके बाद है This is all Chinese copy. स्नीकर्स का स्नूकर्स। बाउंटी का बंटी। ये सारा चाइनी माल है। ठीक है, सो ये एक मीम था। दूसरा, तंदूर पता है ना, सब लोग तंदूरी खाना खाते हैं। ये देखो, ये है हमारा तंदूरिया, ठीक है, IFS स्टाइल से। ये देखा भैंस की आंख, ये देखो उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ओए 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 ओए, पाकिस्तान में देखना। This is a good one. This is a very good one. तजिकिस्तान, बढ़िया। And this is a very good one. बंदा ही घुस गया। This is a nice one. Good meme यार। And listen to this one, huh? This is hilarious. 2017 5 जुलाई में मोदी की जब नेतन्याहू से इसराइल के अंदर मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर उससे पूछा गया, उस मुलाकात के अंदर ये तय हुआ, नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है, उस पे इंडिया की नजर थी। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं। उसने कहा, अजी महाराज, आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा, आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। बोला खाली कैसे होगा, बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। समझ रहे हो, नीट एंड क्लीन गजा चाहिए हमको, मोदी साहब। See how they blame everything on India and saying that, you know, this is a very dangerous thing, because to a madrasa mind, this thing will sit in his head. Yeah. But neat and clean गजा चाहिए। फिलहाल हम बलोचिस्तान को नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, वो कौन करके दे रहा है, वो पाकिस्तानी खुद करके दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारे आसिम मुनीब ने हमारे साथ पैक्ट किया। If I was anybody from Gaza, I would have called up this person and said, साले भूतनी के हम क्या गंदे लोग हैं। तो बकवास कर रहा है। नहीं तो वो तो गाजा वाले will buy anything like this. Look at the level of the game. I mean, it's look at the level of this is the level of hatred. This is the level of hatred they have against India. This is the level of their absolutely, you know, should I use it? Should I not use it? Where the light doesn't exist is basically on your head.
This is where you start from, this is where you live, and this is where it joins. This is the despicable Pakistani mindset. The third class, despicable Pakistani mindset. Useless लोग हैं ये, third raters. तभी तो इनका ये हाल है. It's amazing how this so-called country has survived till now. I mean, I saw that video with Shehbaz Sharif driving the car with this guy, Erdogan. I think are they a serious nation? What are they doing? No, they are not serious nation. They are not serious people. Time pass कर रहे हैं सारे वहाँ पर भैंस क्या? अरे forget Gaza. Their journals have इनके जर्नल्स ने हमारे साथ किया हुआ है ना कि हम तुमको बलूचिस्तान साफ करके देंगे, चीनियों को निकालेंगे वहां से. तो ये बलूचिस्तान इनके जर्नल ही हमको दे रहे हैं ना. क्या हमको दे रहे हैं? हाँ, उन्होंने ही तो दिया है ये हमको लिख के कि हम बलूचिस्तान आपको देंगे. जर्नलों का ही तो पाकिस्तान के जर्नल ने दिया है. नेतन्याहू को छोड़ो, ये तो पाकिस्तान हमारे को दे रहे हैं, तो उनके जर्नल ही दे रहे हैं. तो आप बोल रहे हो इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया है ताकि बलूचिस्तान ले ले और पाकिस्तान आर्मी के साथ राजा साहब. हाँ, तो पाकिस्तान आर्मी ने कहा ना साफ करके देंगे, हम निकल जाएंगे, बिल्कुल साफ करके देंगे. तो वो साफ हो तो रहा, 6-7 डिग्री साफ कर दिए उन्होंने. ये तो जर्नल मिले हुए हैं हमारे साथ, पैसे लेते हैं हमसे, अमेरिका में घर खरीदते हमारे पैसों से. ऐसे ना बोलो, कोई ठुक ठाक जाएगा वहां पर बेचारा. मैं तो सच है, इसमें क्या है, क्या ठुक जाएगा? जाके देखो जर्नलों को पैसे कहाँ से आते. और क्या, जनरल बाजवा ने जो भारत के साथ शांति पीस एग्रीमेंट किया था, हाँ उसने किया था. मुनीर ने इनको बोला मैं तुमको साफ करके दूंगा बलूचिस्तान. कर तो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आप आर्मी हटा रहा है अपनी पीछे. बलूचिस्तान के पी सारा साफ करके दे रहा है. एब्सोल्युटली. और क्या, चलो पाकिस्तानी जर्नलों ने हमको दिया. लेट्स गेट इनटू सम क्वेश्चंस गाइस. सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस. मिशन 400K, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. अगर आपका फोर्स रहे और आपका पुश रहे बिफोर द वीकेंड, एक्चुअली बिफोर द नेक्स्ट टाइम वी मीट राजा जी ऑन संडे नाइट, वी शुड बी एबल टू हिट मिशन 400K. सो प्लीज हेल्प आउट द चैनल, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट. अच्छा, किसी ने लिखा था एब्सोल्यूट सिनेमा, मेरे को लगा किसी ने लिखा एब्सोल्यूट चीमा. मैं बोला यार ये कहां से आ गया. Not much of a difference between the two anyway. Both are equally entertaining. I honestly, I haven't seen a video or a clip of that guy or anything of these two people for 6-8 months. I mean, कभी scroll करते करते कुछ आ जाता है ना. I have not even seen. वैसे ही आ जाता है. देखा ही नहीं है मैंने. मैं बच्चे ठीक है. नहीं, मैं उसके पहले 5 सेकंड देख लेता हूँ. पहले 5 एंटरटेनमेंट है. सिनेमा चीमा एक ही बात है. Both have same value. 0. All right. Except entertainment. Anushi ji, welcome back as a member. Thank you so much for joining back again. Ashoka Rule Kandahar, thank you so much. America won't let Pakistan break, Afghanistan break. This is not the old America. This is not an old America. Americans would want a lot of break in Pakistan. Baloch are not jihadi zombie like Pashtun Taliban. Thank you so much for your contribution. Okay, thank you for the point. Satish Patel ji, thank you so much. Sir, tell me about Norway's role in deep state. Norway? यार इनके ना ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. ठीक है, must be something. मतलब in a sense कि this is too wide a question, you know. नहीं, see, I'll just be honest with you. All these Rajwadas that were there, the Dutch royal family है, the Norwegian royal family है, all these things are there. So trust me, these royal families they're a past. No, Norway is in today's position is not in that position of influencing anything. No. They don't have that influence, but they sit on the high table. वही मैं कह रहा हूँ. Obviously they sit on the high table. These Aga Khanis and all that get a lot of funding from there. I know that, but I'm saying they don't have that influencing power in. They are on the table, but the anti-Sheikh Hasina operation, which was conducted from Norway. The anti-Janta operation, which is happening with the NUG, the National Unity Government, जो आपकी म्यांमार में चल रहा है, they have an office in Norway again. तो वहां पर even I remember Muslim Brotherhood, when they were kicked out, they also went to Norway for some time.
So Norway it's has been the capital of all, spy covert activities. ऐसी चीजें बहुत वहां पर होती हैं. Even now, Norway is like the one of the biggest spy capitals in Europe. पहले बेल्जियम और ये सब होता था वो. Yeah, so it's basically वही मैं कह रहा हूँ ना, they don't influence anything as a country, but they are used as a base basically. They provide it's like a bit of Erdogan's Turkey, I would say. Bit of Point taken. Similar lines. How strong is ISKP presence in Balochistan? Not very strong. They do have a couple of camps there, but they are not extremely strong in Balochistan. Okay. Naveen ji says, forget the government. That isn't important. The army didn't refute it. I am telling you, dare anybody in Pakistan refute Maulana's word? How can army refute something which army wants him to say? That tells you that the journal is completely fucked up. It's a warning to the journal. Arindam ji, thank you so much for becoming a member. Satish Patel ji, thank you so much for your contribution. Uske baad, Vishis Das ji says, Muneeb ji, what is the Aadi and Muneeb ji is the most happiest person right now. Well, yeah, we are happy. The happiest the day they break completely off. That day we'll celebrate. Yeah, I mean, I don't know when that will happen, but yeah, the only reason we are happy, honestly telling you, jab hum log before offline we were talking about it, the only reason we are happy is that when we analyze something, it actually comes across the way that we analyzed it. ठीक है, and 2 हफ्ते से हमने both of us have been focusing on Balochistan for the past 14 days, and this is the third show in 14 days we've done on Balochistan. Yeah, and we have been bang on saying what is happening, and it's good that people like Maulana come and actually give a stamp of approval to what we have said. It's a thing in itself. It's not easy. Maulana is subscriber of Dev Talks. No, it's literally stamping out what we have been saying. Otherwise, ये Pakistani आके बोलते हैं आप propaganda कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. आज कहाँ है ये? Where are those Pakistanis who were saying we're doing propaganda? How was it Assam? Yeah. बड़े comment करते हो तुम लोगों को. Shiv Shakti ji, thank you so much. Any hope of getting a Shakti Peeth present in Balochistan? Well, there is hope, long time, but not unless Sindh comes into your. अभी not in near future. दूर है वहाँ पर. Changai near Nushki is also gone. By the way, Kolpur near Quetta has a sizable Hindu population. That's true. Not anymore, by the way. That's true, but yeah. So that's what I said. Hindu populations, yeah, in Pakistani terms, could be even 500 is a very sizable population. Fair enough. But I don't think it's there anymore because all these people, the last India जो government human rights report जो आई है, and that's a pretty scathing thing. I'm not able to pick up right now in my mind the specifics, but one thing that was mentioned is the amount of people that have come in from Sindh into India has actually doubled in the past 2 years. So past 3 years. Yeah, most of them are Hindus. So there's a lot of movement from Sindh into India, which is being taken into Gujarat and such areas. वहाँ पर southern Kutch के अंदर उनको वहाँ पर settle किया जा रहा है और वहाँ पर काफी बनाया हुआ है जगह इनको settle करने के लिए. So there's a huge amount of Hindu population which has been brought in or is being accommodated from Pakistan, from Sindh especially right now. Now you don't know ये बलोचिस्तान से भी इस तरफ आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है. So नहीं, बलोचिस्तान से नहीं आएंगे क्योंकि बलोच are somebody who actually take care of this kind of population there in their own. That's there. So in Balochistan, yeah, it's there. Yeah, the mandir is fully operational there. वहाँ रोज भजन होते हैं, सब कुछ होता है. And it's the Baloch who take care of it on daily days of it. No? So that is true. With Baloch, that is a standard. RKG कहते हैं, what is the current situation in GB? How now that KPK is not under control, how are they maintaining their troops on the glacier? Oh, well, this is a good question. They are maintaining for now, but how long will they be able to maintain it? And GB ka bhi, things are very, very fluid because, I'm expecting protest in GB somewhere in May, June, let's say that.
And if this thing gets serious and they start losing these areas, then supplies to their glacier is going to get hit. Obviously, then the Pakistanis will have no option but to withdraw a bit more, or downsize their strength. That could be a possibility. Okay. Fahim Zai Saab, he says, can I join the stream sometime to tell you about the mindset of Pashtuns and Baloch in Pakistan and Punjab? I'd appreciate that, absolutely. Also, complete shift I of saw a young complete Pashtun shift of young Pashtun population from Ghazwa Hind to nationalist. Please join us. Send me a mail. Yeah, and nationalist Pashtuns have always been very nationalist. And Ghazwa Hind, boss, we have been saying Ghazwa Hind. Hind means Pakistan. It doesn't mean Hind. Hind, it doesn't mean India. So if they want, Pashtuns are fiercely nationalists. They always have been. And the Ghazwa Hind is Pakistan. In TTP's, in Taliban's parlance, it's Pakistan. Fahim Saab, you can mail me. मेरा mail नीचे description में है. आप मेरे को mail लिखिए, and we will be sure to sit down. All three of us can sit down and actually have a chat about it. That's not a problem. Anytime. Welcome. Yeah. We're more than happy to do that. Yeah. Amandeep Khurana ji, thank you so much for becoming a member. Good, oh Lord, thank you so much. Interesting question. Chinese and European are working together against India's. Could be. Yep. Yeah. Absolutely correct. But then the question is how much of trust the Europeans are going to put in China. It's just not that much. Not that. But yes, you're right. Nishan Khannaji, what's happening with Qatar? Qatar, as I say. Very dangerous country. Very dangerous country. But at the same time, what is happening is it's happening in terms of one, the Russia-Ukraine thing, and also on the Gaza. What is happening in the Middle East. He's in a very vulnerable position today. The vulnerable position is not about the money or anything like that. The vulnerable position is his own position, because America does not appreciate Qatar's role. Let me make it very clear. They don't like the country at all. तो वहां पर थोड़ा सा उसको help चाहिए. He needs some talks with the Saudis also. Because Saudi is going to settle out Israel and this and that. So वहां पर he's feeling a little bit of a push. No, but it's very difficult to settle these things without Qatar also. They need to take them in the loop. Because so he basically wants, what he wants is Modi Saab see, Muslim Brotherhood, Qatar, Doha deal, Qatar. Okay. Everything is happening in Qatar. So all that mess which the Saudis had created and they wanted to throw out was taken by Qatar, and the Qataris are running. And Qataris have very deep pockets, right, to run all this nonsense. So at the moment, but what is happening is in terms of Middle East, especially Gaza, Gaza को लेकर जो चल रहा है उसको लेकर है, और यूक्रेन और रशिया को लेकर. That is why the Qatari Amir had come here. He was on a visit, emergency visit. Thani. Emergency और भी कुछ है, which I kind of don't want to open out right now because I don't have any proof or any connector right now. मेरे पास एक theory let's not talk hypothesis. Yeah, it's hypothesis right now. You want to put out a theory, you can. My theory is pretty simple. See, the reorganization of the Middle East is going to happen through the IMEC. Okay? And the IMEC idea was born through the I2U2. ठीक है जी? Now, I2U2 का जो idea आपका बाहर आया है, उसके अंदर एक security framework बनेगा where you will be coordinating with Israel, UAE, US, and of course I2U2S, which is Saudi Arabia. Qatar wants to be a part of that security framework. That's one. Second is Qatar sends a lot of money to a lot of our certain institutions. Okay? That has been caught and that is basically getting stopped. Dusra. Third most important thing, and this is very critical, because the gas game is going to be very, very interesting going forward with America coming in. Qatar now we are taking from America. Yeah, Qatar stands to lose a whole lot of gas supplied. So he's now wants to get into a long-term deal, which he's already signed with you, but that's a non-closing deal. In the sense, it's a non-binding deal. So this time he wants to kind of come into some sort of, thoda to confirm kar do mere ko sort of a thing. So he's come here.
And yeah, बाकी ठीक है यार, he's invested $10 billion. Fair enough. ठीक है. So there's a little bit of this is not. No, you are right. The assessment is correct. Yeah, there's a larger game as far as Qatar is concerned, and there is a reason Modi also was nice to him, because he holds. Modi has always been nice to them. Yeah. He has always been nice to Qataris. He has very good relations with the Qataris, despite the mess they make in our country. He still has very good relations with them. You know, honestly, the mess is actually not made by him. To be honest with you, it's actually his mother who does all this. Right? Whoever, him or his mother, at the end of the day, his mother is the one. His mother is basically, she doesn't let him rule. Also, by the way, she's quite nasty. She sits in London most of the time, and वहाँ से चाबी घुमाती है, and she's part of the the round table and everything like that. वो काफी पहुंची हुई चीज है इसकी माँ. There's a joke in some of the Arab countries कि when the Qatari auntie goes, then things will kind of normalize in the Middle East. तब तक ये normalize नहीं होगा. So she's quite an influence on him also. She's quite a spoiler actually. Yeah. So I mean, chakkar hai iske andar. All right, last one. Rajaji, Vivek says that you will be quoted for this statement in the Pakistani parliament soon. I'll be quoted for what? Balochistan. Which statement? Balochistan, let them quote me. I'll be very happy if they quote me. Why not? That will set my detractors right. Yeah. Wouldn't be happier. Absolutely. Raja Saab, thank you so much for the extra time this week. We need. Thank you, sir. Always a pleasure. I was literally like this. I was so happy. There were people who were tweeting yesterday that we want it. So it's a good thing we did it. I'm happy with it. Fantastic. Thank you so much. Bhai. Let's watch Pakistan very closely. Watching them. Absolutely. Before you sign off, guys, the score is 397,773. ठीक है, too many sevens in the number. But in any case, आपसे सबसे request है, there's just now 2,300, 2,200 something left. तो जरा hit करिए, spread करिए, and हम एक हमारे दो, मतलब आपका एक और आप दो किसी का सब्सक्राइब कराइए. So it will be really good help to the channel. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bharat.